do you have like a list of check marks that you gotta make apart from, of course, travel stories? And I'm gonna be petty and ask, do you have like a exterior, physical, or like that sort of body and like tall or this and that? Like, do you get it what I'm talking about? Yeah. Honestly, yes, I do. I want my partner to be like Good thoda looking. like presentable ho. Most definitely. So not very tall but taller than me. But आराम से होगा. अरे होना चाहिए. everybody say like तू तो कितनी छोटी है वो 5'9" भी होगा तो चलेगा. Personality, you know how Yeah. when you walk you have a personality. I love When you that. enter a room आपकी personality की fuck. That's what I want. That's all I want. That's it. Just these two factors. Just a nothing else? personality. I would love that. ऐसे बाल वाल ना हो तो. गंजा हो तो फिर वो अगर कैप पहन रहा है तो इट्स फाइन बट नो बॉल्ड No bald guys नो for you? बॉल्ड गाइस आई लव मेसी हेयर दिस एंड दैट और The curly hair kind of. या When it comes to me, मुझे in terms of guys, because I'm tall, I just want a tall guy, dude. And How I'm tall? 5'9", so at least 6 or onwards, 6 and onwards, like bro, 6 feet. Like I'm 5'9". I want to wear heels. I still don't. I cannot actually because the guys are usually not as tall as me, and I would love to wear a heel around my man someday. So 6 feet का तो हो minimum. ये तो मेरे आधे तो लड़के इधर ही चले गए. Everybody who I see 5'8", 5'9" max, and I'm like, yeah. पंजाबी लड़के थोड़े 6 से ऊपर होते हैं कोई भी चलेगा. अच्छा होना चाहिए वैसे. मेरे डील बट हाँ, हाइट आई थिंक अब मेरा डील ब्रेकर है, विच इज काइंड या आई डोंट वांट टू पुट इट इन एज दैट, बट है. एंड देन अगेन somebody who is presentable, somebody who is well spoken and a conversationalist. मुझे बहुत बातें करना पसंद है. आई एम अ yapper. आई एम अ प्रोफेशनल yapper. बट और वही जो कैन होल्ड अ कॉन्वर्सेशन, और किसी की ना इंटरेस्टिंग बात है यार, मतलब ज्ञान ना पे, लाइक आई डोंट नो हाउ टू रियली से इट, यू नो, लाइक जस्ट हैव अ नेचुरल फ्लो ऑफ कॉन्वर्सेशन. ऑल्सो आई वुड लव टू हैव समबडी, इट्स नॉट अ डील ब्रेकर दो, हु हैज हैड और लिव्ड एन इंटरेस्टिंग लाइफ, एंड they just have like stories Happening to share. life. Happening life, and they have lived an interesting life. नहीं कि मैं तुझसे कुछ पूछूं, कुछ नहीं यार, बस वही सेम ओल्ड. बोरिंग आदमी नहीं चाहिए. आई थिंक नॉट अ बोरिंग पर्सन. इफ व्हेन आई से नॉट अ हैपनिंग लाइफ की कुछ क्रेजी ही कर दिया है, बट जस्ट somebody has lived like a full life and they have experiences and stories and things to share, and it's a very attractive trait, as you were saying as well, कि there's something that they can teach me, or like उनको किसी चीज़ के बारे में पता है जो मुझे नहीं पता, मुझे बड़ा इंटरेस्ट आता है, बिकॉज मेरे को आई लव लर्निंग अ न्यू स्किल. yeah I have I a love point to learning, add yeah. without making you feel dumb. Oh, most definitely. That's just, yeah. And somebody who's empathetic. Oh, and he has to be an empath. I cannot with emotionally unavailable men. No, I want the most, I don't know, emotionally available, the most full of feelings sort of man. तो baby you Not, yeah, sure, that as well, but also just, I want him to be like, you know, some like high on emotional intelligence. That is what I want. yeah An emotionally intelligent man is somebody I एंड आई need. थिंक आपका वाइब तभी मैच होती है व्हेन योर इंटेलेक्चुअलिटी इमोशनल इंटेलिजेंस मैच. इफ मेरी इतनी है और अगला बंदा कुछ भी नहीं, लाइक ठीक है ये वो है, तो नो यू विल नॉट वाइब. आई थिंक नंबर वन, इट्स गुड यू मेंशन, इट्स नंबर वन कि आपकी इंटेलेक्चुअलिटी, द वे यू थिंक, द वे ही थिंक, इवन इफ इट्स ऑपोजिट, बट यू नो द लेवल्स इट शुड Yeah, मैच. it's there. And I love, like, again, a witty conversation and like throwing in those remarks and make it flirty. Have a good, again, conversationalist. You gotta have those skills. You gotta have that charm about yourself. Because if you're my man, I want to stay attracted to you. Not Yeah. just for the first date. Do you get it? Some people have that thing about them. I'm like, charismatic. Like, you know, they have the charm about themselves. I would want to be obsessed with the guy I date. And likewise, I would want them to be like, Obsessed with man, this girl, I get to wake up, you know, and be with this girl every day. I want that energy. इट्स ऑल लाइक मेरे को लगता है कि मूवीज में हम देखते हैं एंड देन वी जस्ट Dreamy. हम अपने दिमाग में सोचते हैं, बट आई थिंक देयर आर पीपल आउट There are people out there.